Welcome to Unofficial Electrical Technology. UET, a step towards great success. Hello. Join our Telegram Hello. channel for more discussion. Otherwise, scan the QR code and directly to join our Telegram channel. Follow us on Twitter. Those who are new to our channel, please subscribe our channel and hit the bell icon for latest updates and lectures. Okay. Hello. Hello. Is it audible? Voice ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି? Hello. Is it audible or not? Hello. Okay. Hello. So, good evening to all. Again, welcome to our YouTube channel, UET. So, is it properly audible or not? Please take a type in the chat box. Type करो chat box रे. बोलो जय महाकाल जय श्री राम राधे राधे समस्ते भलर थाओ भाई आ पाठ पढ़ा स्टार्ट करिबा आज टिके भीतर को जीवा तम इलेक्ट्रिकल टॉपिक उपरु हला सुधांशु शेखर मुदली गुड इवनिंग बालुकेश्वर गुड इवनिंग विनायक रणा गुड इवनिंग नीतीश पृष्टि ओके गुड इवनिंग पिला मानु के शेयर कर दियो जल्दी जल्दी तम सांग मानु के शेयर कर दियो ताकि से जॉइन हो जातु आज एक्चुअली मु कौन करी ना मोर ऑलरेडी रेकॉर्डेड वीडियो थिला मु सेटा को लाइव रे पकेबी हला आराम से पढ़ जार जहाँ डाउट हम कमेंट बॉक्स रे बा चैट रे टाइपिंग करिवो मु तुम डाउट क्लियर करिवि किछि असुविधा नै आई होप कि किछि डाउट बाहरिबो जदी भी बाहरला इफ ताले मु अछि हला सो जल्दी जल्दी शेयर करो पिला मानु शेयर करो मिनिमम 20-30 पिला नहले आज का टॉपिक ता भल लागिवनी काहे ना आज पूरा कांसेप्ट ओरिएंटेड टॉपिक ता अछि ओके तो जल्दी जल्दी शेयर करो हमें स्टार्ट करिवा ओके ठीक अछि लेट वी स्टार्ट ओके ठीक अछि मु स्टार्ट कली हां पिला माने all today we are going to discuss about your current okay so previous class रे हमें already current पढ़ी सारचे कोन current रो definition all those things हला so आज हमें देखिबा एक्चुअली current हमर दी प्रकार रो अछि is it audible now सुबा जाउची पूरा Yes, sir. ठीक ठाक अछि ओके so current हमर बेसिकली दुई प्रकार हला कोन कोन गोटे होची डायरेक्ट करंट आ गोटे होची कोन प्ले ना अल्टरनेटिंग करंट तो डायरेक्ट करंट कौन है तो डायरेक्ट करंट कौन पिले मुझे कटी लिखी कौन लिखी देखो इफ द करंट डज नॉट चेंज विथ टाइम बट रिमेन्स कांस्टेंट इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट एंड लिख दिया represented by symbol I करंट सिंबल आई नुई कि पिले सेट पे तो कैपिटल आई रे रिप्रेजेंट करा ता माने मुई खा आर गोटे माने कोन बुलेट पॉइंट लिखियो तो बुलेट पॉइंट एक्चुअली कोन
तो बुलेट पॉइंट टा अलग आसीबो कोन आसीबो सेटा लेखो ए डायरेक्ट करंट which remains constant with कोन करे बोले with का सहित constant हबो with टाइम सहित constant हबो तो एटा होची तुम मानकर कोन पिले ना बुलेट पॉइंट एटा होची तुम मानकर बुलेट पॉइंट ओके सो एबे देखिबा एक्चुअली तापर चलो सेठी की आ गोटे बीट करी लिखो एटा हैला conversely or conversely देखो conversely a current which change with to respect to time with respect to time with respect to pile kono time is termed as or is called as क्या लिखिपारे is termed as कोन पले जे with respect to time सहित चेंज हबो माने भ्यारी करी करी जीवो हैला ताको कोन को जीवो ना अल्टरनेटिंग करंट कोन को जीवो पले अल्टरनेटिंग करंट दैट इज एसी हैला सेटा हम आगु को पढिबा एसी सर्किट तो पूरा गोटे टॉपिक अछि एसी सर्किट बडो टॉपिक ता सेटा हैला तो आमे इकरा जहां भी पढिया सब डीसी पढुछे हैला तो पहिले देखिबा लेखो आगे टर्म आज एट लेखो कंटिन्यू करो अल्टरनेटिंग करंट दैट इज ब्रैकेट भीतर तो लेखो कैपिटल ए सी ओके कैपिटल ए एंड सी ओके सो पुनी सी भी सेया व्हिच इज सेम लिख परियो व्हिच इज represent which is represent or represented लिखो represented by the symbol that is small I कौन बुझिलो पिले को ना डीसी टा को हमें रिप्रेजेंट करछे कैपिटल ले किंतु एसी टा को हमें रिप्रेजेंट करछे स्मॉल आई रे ओके कौन कहली सुबिला ना नहीं अरे पिले सुबुची तो यस सर ता बोले को द मोस्ट कॉमन देखो द मोस्ट कॉमन फॉर्म of time varying current is sinusoidal current सेटा कोन को जाय पिले ना sinusoidal को जाय हला sinusoidal current that is your alternating quantity okay तो तार भी गोटे बुलेट पॉइंट आसीबो बुलेट पॉइंट भी लिखि परिबा किछ बडो कथा न तो तार बुलेट पॉइंट ता पिले कोन हबो ना हबो लिखो an alternating current अरे पिले नोट्स बनउछो तो परफेक्ट मु नोट्स मागीबी केतेले मागी देई पारे हटात कोई फोटो उठे पीडीएफ करी दियो हैला नोट्स बनाओ भाई वीडियो मिल जाउछ बोली भाबने क्लास अटेंड करिवनी बोली वीडियो मिलुची एटा वीडियो मात्र केता मिलिबो सब मिलबनी पिले 6-7टा एमती मिलिबो तम सांग मान सेटा शेयर करो सेमान देखन तो केमती पढा होउची से लिंक टा को शेयर करतो समस्त को एक्सेस दिया आइची हैला आराम से जाओ वीडियो देखो किंतु जे लाइव क्लास अटेंड करची से डाउट ता पचरी पारिबो वीडियो रे तो पिले तू तो डाउट पचरी पारिबो ना त माने ना सेठी को YouTube हेची तुम कमेंट रे दे दबो डाउट ता तुम दे पारिबो ना सेटा होची फायदा द डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर एंड लाइव लेक्चर okay so देखो an alternating current is a कौन लिख पारी ना sinusoidally varying current देखो is a sinusoidally varying current with time that is your bullet point प्लीज आकु कोठरी भीतर रखा जीवो नल हबन हला तो आकु हम क्या देखिबा एक्चुअल डायरेक्ट करंट कोन आउ
डीसी कौन एसी कौन टे ग्राफिकाल फिगर देखी देखी हम पड़ेगा आउ बेसी पढ़िबान भीतर को जीवा नहीं जति दरकार से खाली कहदी तुमको आउ बेसी दरकार नहीं है देख पिले এই axis টাকু ମୁଁ ନେଲି କଣ ପିଲେ ଏଇ axis ଟାକୁ ପିଲେ ନେଲି କଣ ନା ଏଇ axis ଟାକୁ ପିଲେ time axis ନେଲି ହେଲା ଯେହେତୁ ମୋର time ଟା ଭ୍ୟାରି କରିବ କି constant ହବ ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବା ହେଲା ମୁଁ ସେଇପାଇଁ time ଟାକୁ ମୋର constant axis ନେଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ପିଲେ ଏଇଟାକୁ ଧରକ ମୁଁ ନେବି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ axis ନେବି ସେଇଟା ଗଲା ତମର କଣ x axis ଏଇଟା ଗଲା ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଏଇନା କରିବି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ହବ ପିଲେ ନା y axis सॉरी এটা উল্টে বাদ করতে দেনা जस्ट अ मिनट ठीक ଆଡ ଏଟା ଇଏ କରतो ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କର କଣ ପିଲେ ନା करंट आई मोटा डीसी ପାଇଁ କା କରୁଛି ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ମୋର आई एक्सिस ओके तो हमर डीसी रे केमिति जाय पिले से कोन लिखिला डेफिनेशन टा देखा डेफिनेशन लिखिला कि ए डायरेक्ट करंट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ता माने तर ईच एंड इंडिविजुअल पॉइंट से कांस्टेंट ही जीवो से जो वेवफॉर्म टा भी आसीबो सेटा कांस्टेंट इन नेचर हो ता माने ता वेवफॉर्म टा पिले केमिति आसीबो ता वेवफॉर्म टा सर एम्प्टी आसीबो देखो आ वेवफॉर्म टा पिले एम्प्टी आसीबो पूरा कांस्टेंट कांस्टेंट माने कोन मु जदी तुमको तुम कह सर व्हाट इज कांस्टेंट मु सेठी पुनी तुम बुझीबी ना नाही बाबा कांस्टेंट या देखो पिले कहि दोछि एटा तुमरो को पॉइंट पिले ओरिजिन पॉइंट बा 0 पॉइंट यस ना अरे हो ना नहीं 0 ना नहीं तापर धरो हम कहबी एटा 1 एटा धरो कहबी 2 एटा धरो कहबी 3 एटा हम टाइम गुडा 3 4 5 6 धरो अप टू 7 सेकंड तक आमे नउछोंती टाइम तो 7 सेकंड मु तुमको कहबी पिले धरक मानियो धरक फॉर एन एग्जांपल एटा होची 0 एटा धरक करंट एक्सिस टा नउचला करंट एक्सिस टा मोर धरक एटा धरक 1 एंपियर एटा होची 2 एंपियर एटा 3 एंपियर एटा 4 एंपियर मु तुमको कहबी पिले मोटे कहिलो पिले तमानकर करंट 3 सेकंड रे केते अछि तमे कोन कहबो पिले ना सर 3 सेकंड रे 3 एंपियर ही अछि देखो ना पिले 3 सेकंड रे तुम 3 एंपियर अछि ना नहीं हो ना नहीं यस और नो अरे पिले 3 सेकंड रे 3 एंपियर अछि मु जदी तुम कहबी अरे पिले मते कहलो 5 सेकंड रे केते एंपियर अछि तुम कहबो सर 5 सेकंड रे भी सेम हमर सेम 3 एंपियर अछि त मान देखिलो से टाइम से तो वैरी करूची की टाइम से तो वैरी करूची की पिले करूची ना कांस्टेंट की रहूची टाइम से तो को टाइम से तो कांस्टेंट की रहला नहीं मते को तो एटा को कहा जाए डायरेक्ट करंट एटा को कहा जाए पिले कोन ना डायरेक्ट करंट ओके एटा पिले कोन कहा जाए ना डायरेक्ट करंट ओके एबे जीवा ओटा लिभेई थी तमे पुनी कंफ्यूजन हे जीवो ना आउ थोड़ा टान दो से बस हैला एबे देखिबा कोन ना अल्टरनेटिंग करंट कोन देखो पिले अल्टरनेटिंग करंट पुनी बुझो अल्टरनेटिंग करंट होची पिले धरको तार मो एक्सिस टाको नेली एटा नेली मोर टाइम एक्सिस एटा मोर कोन पिले ना टी टाइम एक्सिस समान रहला तापर पिले कोन करबी तार करंट और वोल्टेज एक्सिस नेबी करंट और वोल्टेज एक्सिस समान पिले हैला सेडा किछि चेंज न थाए तो पढेला बेले कहि भी छोडा एसी करलेला टेंशन निए नहीं कहि थिली भी थरे भी हमर से YouTube क्लास में कहि छी ऑलरेडी हैला आउ थोड़े सेडा रिपीट करूनी एटा होची स्मॉल एरिया में डिनोटेट करले हैला तो ये कोन होची पिले ना या हमरो कोन हबो ना या हमरो एम्प्टी जीवो देखो पिले या हमरो साइनोसोडियल इन नेचर रे हबो माने साइनोसोडियल नेचर रे या हमरो फ्लो हबो एम्प्टी हबो हैला या हमरो कोन हबो पिले एम्प्टी हबो ता माने तमे कहबो सर मु तुम डेफिनेशन कोन कहितल ना an alternating current is a sinusoidally varying current with respect to time but time से तो जे vary करछि से ताको कह जे कोन alternating current तुमको सर केमति vary करला देखु ना एटा origin point 1 तोरो मान्यो एटा होछि 0 पॉइंट गला एटा 1 पॉइंट धर एटा मान्यो 2 पॉइंट एटा धर 3 पॉइंट एटा माने धर 4 पॉइंट माने 4 सेकंड हला मु 4 सेकंड नीची धर मु एटी कहबी एटा होछि मोर
1 ampere एटा होची 2 ampere एटा होची 3 ampere एटा होची 4 ampere हला मु तुमको कोई पिले मते कहलो 1 सेकेंड रे केते करंट अछि तमे कहबो सर 1 सेकेंड रे ती करंट अछि केमि जणेबो ना 1 सेकेंड रु ऊपर को डॉटेड मार्क मारिबो तापरे पुणी सेठू जो कोरस्पोंडिंग टू जीरो अछि ना 1 सेकेंड रे मोर केते अछि रे पिले केते करंट अछि ना 3 एम्पियर करंट 3 अछि ampere. सेमि तर मु कहबी पिले 2 सेकेंड रे केते करंट अछि तमे कहबो सर 2 सेकेंड तो टोटल सर इतर देखुना टोटल पर सर ता सहित समांतल हि होउची समांतल माने पूरा 180 डिग्री हि होउची ता सर एटा कोन अछि को पॉइंट अछि सर 0 पॉइंट तो तमे कोन कहबो ना सर 2 सेकेंड रे मोर 0 एम्पियर अछि तम पुणी कहबी पिले 3 सेकेंड रे केते अछि मते कहलो तमे कहबो सर 3 सेकेंड सर सर एटा ऑपोजिट इन नेचर अछि माने उल्टिया अछि तो उल्टिया हेले तार क्योंटी आसीबो धरो सेठू जाउतला एतिकी ताले एक रे जेतिकी थिबो तार ऑपोजिट ता सेतिकी होबो ता माने 3 सेकेंड रे पिले केते हो ना -3 एम्पियर होबो बुझी पाइलो ता माने देखो माइनस आछी माने गोटे पॉजिटिव हाफ साइकिल अछि गोटे नेगेटिव हाफ साइकिल एटा को जे पॉजिटिव हाफ साइकिल एटा को जे नेगेटिव हाफ साइकिल दीटा को साइकिल मिसी गेला परे सेटा को साइनसोडियल को जे बुझी पालो पिले रेडी रेडी जिबा आ मु बेसी कहयो गुडी चाहू नाही हैला एसीडीसी हे गेला अरे पिले हैला ना नाही Yes, मते sir. तापर मागु जी तो से जो माइनस और प्लस करंट आसिला सेटा मु तुमको टिके खाली देखै दोची टिके सुसै देकी पळै गेला देखो पिले देखो एटी देखो आज वी डिफाइन current as we define current as the movement as the movement as the movement of charges of charges of charges the direction of flow must be or must have associated माने कोन देखियो पड़ियो पुनी मानेटा बुझियो पड़ियो ना धरको फॉर एन एग्जांपल पिले मु कहिबी गोटे एग्जांपल दोउची त मानु बुझिया पई बेटर मजा मिलिबो देखो धरको एटा गोटे पॉइंट आउ एटा गोटे पॉइंट हैला एटा धरको मान्य ए पॉइंट एटा धरो मान्य बी पॉइंट हैला मोर ए पॉइंट टू बी पॉइंट को करंट जीवो हैला मोर पिले ए पॉइंट टू बी पॉइंट को करंट गला मानि नियो कि मोर ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक करंट गला टिके रो करंट पुनी जीवो ना करंट हमु जीवो पड़ियो ना हां ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक पिले हमरो कोन हैला ना पिले करंट गला हो जाऊ गला किंतु ना ए रु बी पॉइंट मोर जाउची तो मोर एटी कोन हो पिले ना आई एम्पियर हैला हैला मु जदी कहबी पिले बी रु ए पॉइंट आसीबो पुनी उल्टी आइ जीवो ना नै रे पिले अरे कोन उल्टी हबो ना नै ना हबो नै मु जदी कहबी सेम जिंसटा को जदी कहबी कि ए रु बी को गलु पुनी बी रु ए को आ तले बी रु जेतेले से पिले ए को आसीबो तो मते कहलो सेही जिंसटा माइनस होई जीवोनी हबो ना नै माइनस आई एम्पियर हबो ना नै मते को ना हबोनी को Yes, sir. हबो तो सेटा को हम लिखि देबा कि सेंटेंस रे कहले लिख देबा कि असुविधा नै लिखि देबा कि कहले लिखि न लिखि मु के लिखि देबा आ गेस सब तो लिखि देबा सहीला नै कि नोट्स बनौ तो भले बनेबा नै कि हो लिखो 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 आज पर the conventional current as per the conventional current or the conventional method likho not current conventional method the direction of current flow the direction of current flow is taken as the direction of positive charge movement as the direction of positive charge movement positive charge movement okay positive charge movement so like so in the above figure the above figure the direction of current flow is taken as the direction of positive charge movement as the direction of positive charge movement okay positive charge movement so in the above figure the direction of current flow is taken as the direction of positive charge movement as the direction of positive charge movement okay positive charge movement so in the above figure the above figure
in the above figure, what we can observe here? Now, in the above figure, if color change kariya, if 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 a current if a current of current of I ampere flows in positive direction मतलब कौन ना पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज लिखो दैट इज ए टू बी एमती लिखो बा ए टू टीओ2 लिखो किसी असुविधा नहीं ए टू बी देन द कन्वर्सली देन कन्वर्सली डायरेक्ट लिखो conversely a current of minus I ampere current of minus I ampere flows in opposite direction that is opposite टा पहले कौन है जीवो B to A point clear ना का कुछ असुविधा हला को क्या कुछ असुविधा हला कुहो जाको असुविधा होचे अनुमति हुआ पचारो न सर डायरेक्ट अनुमति को नहीं सर किछ असुविधा हला नहीं हमर रेडी ओते एते कहि दो बस हला मु खुशी तुम भी खुशी को जल्दी पिले तमे जे पर्यंत न कहूथबो मु से पर्यंत मो हाथ स्टॉप रहइबो तमे कहिले आमे आगु पडिबा तमे जदी न कहबो मु हाथ स्टॉप हिजो ना भाई आगे सर हेला तो रेडी सर ओके जी हां से रेडी ता मते कहवा दरकार मु चाहू कि तम मानो पार्टी रो रेडी वर्ड ता बाहर यस सर वी आर रेडी आ गोटे पॉइंट लिखु जदी ए पॉइंट भी लिखि दियो कामर आसो लिखि दियो कौन लिखा एटा गला बी टू ए आउ ए टू बी ओके एबे लिखो इन सम मटेरियल केते गुडी मटेरियल कोन हुए सेटा हम लिखिबा इन सम मटेरियल्स देयर आर so many free electrons there are so many free electrons so that कोन होबो से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स गुडा अछि जे सेटा होबो कोन तार कामटा कोन ता कामटा होछि पिले so that large current or large amount of current or large current are easily attained such material ताको कौन कहा जाए जो थे लार्जली करंट फ्लो हुए ताको कौन कहा जाए कोई परिबो की कंडक्टर अरे भाई कंडक्टर बा वायर रे तो करंट फ्लो हुए ना को इंसुलेटर रे करंट फ्लो होगी देखि नहीं सर ओ लेको मु सेत में एटा लिखिली he easily attains such materials are known as conductor
conductor. Okay, conductor. Okay, conductor. Conductors लिख कंडक्टर्स मोस्ट मेटाल से लिख दियो पुंटरे स्टार्ट करो मोस्ट मेटाल एटा गोटे काम कर पिले एटा टिके हम टिके एटा लिखि दवा कने एटा इंपोर्टेंट है ना कंडक्टर रो डेफिनेशन राइट रहला मु आउथर डेफिनेशन लिखि दी गोटे नुवा डेफिनेशन लिखि दी कि एटा तुम रखि जाओ रेफरेंस पाई का हला देखो मोस्ट मेटाल्स मस्त भया दिखाऊ मोस्ट मेटल्स and some liquids are good कौन कंडक्टर गुड कंडक्टर मतलब मु जो कहली सम मेटल्स और सम लिक्विड्स माने पिले लिक्विड भीतर हमर पानी जीवना नहीं वाटर जीवना नहीं पिले को मते लिक्विड भाई वाटर टा गोटे लिक्विड फॉर्म ना लिक्विड जीव ताले मते पिले मु तुम गोटे छोट क्वेश्चन पचारिबी मते खाली कहबो हां आमे नित्यदिनिया लाइफ रे बा डेली लाइफ रे जो पानी पिउचंती हैला से पानी दे बेसी करंट फ्लो हबो ना हमर डिस्टिल वाटर रे बेसी करंट फ्लो हबो कहि परियो मते को डिस्टिल वाटर कहले कोन बुझुछु डिस्टिल वाटर कहले कोन बुझुछु को परियो मते हम इन्वर्टर बैटरी रे जो पानी दिया होची ताको कोन कहै जाय डिस्टिल वाटर ओके ठीक है ताले डिस्टिल वाटर रे करंट फ्लो हो कंफ्यूज्ड नहीं कंफ्यूज्ड नहीं की एटा इंटरव्यू क्वेश्चन एटा इंटरव्यू क्वेश्चन एटा इंपोर्टेंट गोटे साइट रफ रे लेखो एटा रफ रे लेखो एटा गोटे रफ रे लेखो एटा मते निजु को पचरा जायतिला जीएसपीएल इंटरव्यू रे एठी कोडी जेएसपीएल नो रे भाई जेएसएल जिंदल स्टेनलेस स्टील जाजपुर हला जेएसएल ले डिप्लोमा कैरियर रे पचरा जायतिला ई क्वेश्चन दा माने व्हिच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ता भीतर थिला एटा डिस्टिल्ड वाटर और प्योर वाटर आ गोटे कोन थिला कि सॉल्टेड वाटर हैला एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मने रखता कोउटा विद्युत सुपरी भाई और कुपरी भाई को जाय सेटा हैला तो कोउथे बेसी करंट फ्लो हो मते कोन सॉल्टेड वाटर रे बेसी करंट फ्लो हो ना प्योर वाटर रे बेसी करंट फ्लो हो कहले देखिया डिस्टिल्ड वाटर छाड़ी दियो प्योर वाटर रे फ्लो हो ना सॉल्टेड वाटर रे फ्लो हो कहले देखिया सॉल्टेड वाटर रे बेसी जोरे करंट फ्लो ओके ठीक अछि सेटा ठीक किंतु डिस्टिल वाटर रे बेसी करंट फ्लो हो ना सॉल्टेड वाटर रे बेसी करंट फ्लो हो एटा जाय के गूगल ले देखियो हला देखो सेटा मारो डिस्टिल वाटर रे करंट फ्लो हो ना नहीं प्योर वाटर रे तमे तो प्योर वाटर जानिचो करंट फ्लो हो काना पानी सेटा तुम निजे जानतो तुम हाथ ओदा आइथिले भी तुम इजे स्विच कोड लगाउ तो तुम शॉक लागे यस और नो अरे यस और नो हाँ तो तेणु करी मते कहबो डिस्टिल वाटर रे करंट फ्लो होना नहीं हला गूगल देखि कहबो नेक्स्ट क्लास कहि नले का पचारिबो बड़ भाई मानकु तुमर बड़ भाई माने अछंती सेमान सब टीचर हेले ना गोटे तांकि पचारो तांकु पचारो मु तो चाहूजी पचारे भाई ओके ओके छाड़ो मोस्ट मेटल्स एंड सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर लिख देलो तापर लेखो एइट तो गोटे सेंटेंस सार दबा तापर लेखो materials with relatively few free electrons are known as कौन कह जाए are known as insulator
ओके इंसुलेटर इंसुलेटर्स तापर लिखो पुन लिखो materials whose conductivity lies between conductors and conductors and insulators called कौन कुआ जाए अरे भाई माने कौन कुआ जाए Semiconductor. अनम्यूट हुआ सेमीकंडक्टर गुड Semiconductor. यस गुड yes semiconductor okay semiconductor so comma देख लिखो which plays significant role in electronics इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स ना इलेक्ट्रॉनिक्स रे काम होती है लिखि दे था काले इलेक्ट्रॉनिक्स रे दरकार पड़िबो तो निश्चित जीवो कुआडे सब पड़िबो एटा गोटे गोल बुला आगो इन्सुलेटर हैला लिखिलो सब ओके ओके एबे एबे हमें इंडिविजुअली डेफिनेशन को जीवा ना जीवानी को इंडिविजुअल डेफिनेशन को जीवा की जीवा इंडिविजुअल डेफिनेशन जीवा आज्ञा सर जीवा तो इंडिविजुअल डेफिनेशन जीवा ताले कहूचो जीवा आ कोन अछि गोटे कथा चलो इंडिविजुअल डेफिनेशन जीवा कोन अछि किछ असुविधा नहीं इंडिविजुअल डेफिनेशन माने कोन लेखो कंडक्टर हेडिंग दियो कंडक्टर सेठी कंडक्टर गोटे डेफिनेशन जानलो आ गोटे जानो काली हमें करंट रो पांचटा डेफिनेशन देइथिली गोटे कंडक्टर देइथिलिनी देखो कंडक्टर लिखो ए कंडक्टर इज ए सब्सटेंस देखो ए कंडक्टर इज ए substance which has large number of free electron large number of free electrons when an external energy is applied across a conductor the free electrons move freely माने घूरी परिबे मूवमेंट करी परिबे move freely through the conductor sorry through the conductor okay through the conductor comma देखिए देखो through the conductor अब गोटे लाइन लिखो constituting electric current that is electric current ना भाई से इलेक्ट्रॉन मूव होबो सेटा तो गोटे करंट पास करियो ना भाई ता भीतरे तो सेटा लिखो constituting electric current
तो मते किए कहि परिबो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किए कहि परिबो बेस्ट कंडक्टर किए परिबो को जानथिबो तो इति बेसिक इलेक्ट्रिकल को नले बे तोर मटेरियल अछि थर्ड सेमेस्टर रे पढ़ा होतिबो अरे इलेक्ट्रिकल मटेरियल अछि ना नहीं एथरो थर्ड सेमेस्टर रे पढ़ाइला ना अरे एल्युमिनियम कॉपर पढ़ाइला ना नहीं हां कोउनो ताले गुड बेस्ट कंडक्टर किए कॉपर आउ की कॉपर एल्युमिनियम एल्युमिनियम स्टील कोउनो स्टील कोइले नेसी गोल्ड क्वाड जीवो घरु पळेबो गोल्ड क्वाड जीवो घरु पळेबो की हैं लेख मु कहूची गोटे कथा कहूची लेखी सार आगे लेख देख कॉपर सिल्वर कॉपर सिल्वर and gold are best conductor or are the best conductor the best conductors since किंतु ता भितरे सिल्वर बिकी दुचंती कॉपरटा असुविधा हला गोल्ड तो लगेले बिकी देबे तो तेणु करी हेडा हमु लिखियो पड़िबो कोन लिखियो पड़ो सिंस लेखो सिंस copper is least expensive it is widely used in an or in electrical and electronics industry ओके और इंडस्ट्रीज लिख पारिबा ओके क्लियर आज्ञा सर ताले मते झियो पिला माने तमे गोटे कथा को तम काम आसिला ना तमे को हमर गोटे माने ओडिया रे गोटे कथा अछि ओडिया रे अछि माने कोन माने आम झियो पिला माने जो माने गहना गांठी पिंधुचंती बा तुमे मुदी पिंधुचो हाथ रे पिंधुचो मुदी हैला तुमे बेकर हार पकाउचो ठीक अछि गोल्ड रो तुमे पकाउचो काना सुना रो मुदी पिंधुचो थोड़ी ना सिल्वर रो मुदी पिंधो सुना पिंधुचो सुना कान फुल पिंधुचो सुना नाक फुल पिंधुचो सुना रो सब पिंधुचो किंतु सुना काई गोड़ रे पिंधु किरिबले गोड़ तो सुना मुदी पिंधे रिंग भलिया सब स्त्री लोक माने पिंधुती तम मां माने पिंधुतिबे गोड़ रे काई सुना पिंधो नै मते को सर ठाकुर ना दिबो भाई कोन 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 को सर ठाकुर ना ठाकुर सुना लाइन दे बोली आमे ताको गोड़ पिंधियानी सेटा गोटे रीजन सेटा आई मां कहानी गप कर ठीक अछि आउ किछ रीजन आई मां कहानी गप छाड़ी की सर ठाकुर कोन ना गोड़ रे पिंधले इन्फेक्शन हो जाय इनफेक्शन ना सेगुरा तू ए साइंटिस्ट फाइंटिस्ट वाला कथा कहले हबो नै देख सुन सेटा तुम आईमा कहानी तो गोटे अछि गोटे किछि किछि रीजन थाए जेमिति कि तुमे जानिथिबो माने कोन तुमे जानिथिबो कि माने कोन बेला की थालिया बोजा जाय नै हाथ रे जानिथिबो एटा जानिछ ना जाननो मते को माने ओडिया रे हमर कथा अछि बेला की थालिया जोथरा हम पखाळ खाउचे सेटा बोजांतिनी हाथ रे बाडेवानी माने बोजेवानी जानिछ ना नै एटा बोजेले प्रॉब्लम हुए बस सेमती तार साइंटिफिक रीजन अछि सब तो साइंटिफिक रीजन काहे कि हमें गोड़ रे सुना पिंधंतिनी देखो आमे त गोटे वर्किंग करछे जदी गोटे स्त्री लोकटे से गोड़ रे सुना मुदीटे पिंधिबो से बहुत धनी लोक से सुना पिंधि
ମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧି ଗୋଡରେ ଚାଲିଲା ସେ କଣ କରିବ ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଣ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିଜ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଓଭେନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ସକେଟ ରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ପ୍ଲଗ ଗେଞ୍ଜୁଛ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କି ହାତ ଫାତ ଓଦା ଅଛି କି ଗୋଟେ ହାତ ଓଦା ଅଛି ବାଥରୁମ ରେ ଗାଧଉଛ ହାତ ଓଦା ଅଛି ସୁଇଚ ଟା ମାନେ ଅଫ୍ କରୁଛ କି ଅନ୍ କରୁଛ ଯଦି ତମକୁ ସକ୍ ମାରିଲା ମାନେ ତମେ ଯଦି ଗୋଡରେ ସୁନାଟା ପିନ୍ଧିଛ ନା ଆର୍ଥ ମାନେ କଣ ଆର୍ଥକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ସେଠି ସ୍ପଟ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କାହିଁକି ନା ସୁନା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ସୁନାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ ବହୁତ କମ ତ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ବହୁତ କମ ଅଛି ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଟା କୋଉ ରେଞ୍ଜରେ ଫ୍ଲୋ ହବ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ତମ ବଡିରେ କରେଣ୍ଟ ଟା ହେଭିଲି ସାର୍କୁଲେଟ ହବ ଆଉ ସ୍ପଟ ଡେଥ୍ ସେଇଠି ହିଁ ହବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଏମିତି ତୁମେ ବଞ୍ଚିଯିବ ସେମିତି ତୁମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସଠିକ ନା ମରିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନାକୁ ଗୋଡରେ ପିନ୍ଧା ଯାଏ ନାହିଁ କ୍ଲିୟର ନା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କୁହ Clear, sir. କୁହ ରେଡି ତ ओके रेडी चलो आगू चलो मर चलो इंसुलेटर प्लीज राइट ऑन द तो इंसुलेटर कौन पिले देखो an insulator is a poor conductor of electricity poor conductor of electricity it has practically it has practically no free electrons not है it has practically no free electrons at room temperature aha room temperature most materials including plastics rubber paper ଆଉ କଣ and most liquids and gases falls into this category तो पिले लिक्विड भितरे हमर ऑयल टा लिक्विड जीवन नहीं ऑयल तेल जीवन रे Yes, sir. तेल रे करंट फ्लो हो ना होबनी कौन देखो गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ छड़ धर मान्य कोटे गोटे शॉर्ट सर्किट हो गला शॉर्ट सर्किट माने कोटे गोटे शॉर्ट सर्किट होगी निया लगी गला इलेक्ट्री रे तो फायर स्टेशन को फोन करतो फायर स्टेशन आसी कोन करती जे शॉर्ट सर्किट ऊपर पानी पकोउजी कि रे ना आउ को पकोउजी को पानी पकोउची ना गैस छाडुची ना कोन कोउची को कौन जान यही गुड़ा जानना ना फिजिकल जिनस गुड़ा जानना मु तुम कौन कहि को अरे कुह यार कौन पकोउची फायर स्टेशन लोक आसी अरे फायर एक्सटिंग्विशर गोटे देखिच सबुठी थाए बड़ बड़ मॉल गले थिबो
ट्रेन ने भी जी यात्रा कर देखुव तो एक्चुअली कौन थाए को गैस गैस को गैस थाए गैसटा को गैस थाए को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हाँ एरे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहलु कार्बन डाइऑक्साइड टी तो कहून कॉन्फिडेंस नहीं तुम आंसर ऊपर तुमरो तुम आंसर ऊपर तुम कॉन्फिडेंस नहीं ହେଲା ଯେମିତି CO2 SF6 ଗୋଟେ ଅଛି SF6 ଟା ଆମର କଣ ଇଏ ହୁଏ କଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଇଏ ହଉଛି ସଲଫର ହେକ୍ସାଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ SF6 ଗ୍ୟାସ ହେଲା ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଗ୍ୟାସ ଅଛି ହେଲା ଓକେ ସୋ एवढा हूँ आमर गैस एंड लिक्विड्स ओके ऑयल भी सेमती ऑयल भी माने कौन इन्सुलेटर हम है सब ऑयल में किसी ऑयल अच्छी भावुन जे सब ऑयल तुम कह नड़िया तेल सार करेन्ट फ्लो हम ना हाँ नड़िया तेल भाई फ्लो हम से शालीमार बालाजी फ्लो हम बुझे ना ओ चल जा ना रही कह जा ना रही सेमीकंडक्टर लेख लास्ट वन टाइम गड़ी गड़ी पड़ू रे भाई कौन करिया सेमीकंडक्टर लेख सेमीकंडक्टर हूँ गोटे सब्सटेंस लेख सेमीकंडक्टर इज ए सब्सटेंस इज ए substance that has very few free electron very few free electron at room temperature hence they are neither good conductors nor good insulator insulators okay so basically semiconductor पुणी गोटे किए गोटे semiconductor ना तो आमको दବାକୁ पड़ियो ना दबा silicon is best example for this okay silicon is the principal lekho silicon is the principal or the principal देखो प्रिंसिपल से ना उसे बेस्ट पा प्रिंसिपल सेमीकंडक्टर मटेरियल widely used in the manufacturing or manufacture of electronic device or devices such as तुम जो पढ़ी मुझे नाटा कह ना such as ट्रांजिस्टर पढ़ ना रे पिले ट्रांजिस्टर्स and integrated circuit IC पढ़ी ना नहीं रे पढ़ी नो बिगुड़ा पढ़ी ट्रांजिस्टर ना शुणी ना नहीं ट्रांजिस्टर ना शुणी ना हाँ सहीटा है सरला एति हूँ तुम कंडक्टर सेमीकंडक्टर इन्सुलेटर तापरे आगु को जीवा तो आगु ना जीवानी कोरी जल्दी को जीवा तो
ହଉ ଲେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲେଖ ଆগে ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ମୁଁ ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କହିବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କଣ ଦେଖ ଲେଖୁଛ ନୋଟ୍ସ ମାନେ ନୋଟ୍ସ ବନଉଛ ତ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ଖାଇଯିବି ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ସାର୍ ପିଲେ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଖାଲି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲେଖ ତାପରେ ଆମେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ପଢିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆगे ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଟା ଜାଣ କଣ ଓକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କଣ ପିଲେ तुम डाकुची लेख तुमको आगे डाकुची तुम लेख ମୁଁ ଖାଲି ବୁଲେଟ ପଏंट ଟା ଇଏ କରିଦେବି କଣ କହିଲ ଲେଖିବି ସବୁଗୁଡା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ବାଇଆ ହେଇଯିବି ଲେଖ ଲେଖ when a body is charged ଆରେ ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ କୁହ ବି ପୁଣି କହିବ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁନି ସାର୍ ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜୋରେ ନ ଲେଖିଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଲିଭ୍ ହେଇଛି ରେ ସରୋଜ ଅଛି ସତ୍ୟ ଝିଅ ପିଲା ଭିତରୁ କେଉଁ ଲିଭ୍ ହେଇଛି ହଉ ଲେଖ when a body is charged ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡି ଟା ଚାର୍ଜ ହଉଛି ଲେଖ ସେଟା when a body is charged when a body is charged when a body is charged ଲେଖ 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 when a body is charged comma work is done ଲେଖ work is done work is done in charging it is work is done in charging it okay लिख लो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ फुल स्टॉप दियो तापर लिखो this work लिखो this work done is stored this work done is stored in the charged body in the charged body in the charged body in the form of potential energy in the form of potential energy उमा लिखुच ना नहीं ना उमा उमेश लिखुच ना नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ लिखि पका तुम कॉलेज तो देखेबार अछि वी आर द बेस्ट तो देखेबार अछि तुम कॉलेज पिला केही नांती ओनली एक्सेप्ट यू मन रख तुम सीनियर मानक आज भी मु कहिछि यूजे रु केही नांती जोणी पिला अछि आ सिए ही टॉपर हेकी देखेबो मु चैलेंज मार देछि मो नाक काटिबुनु खाइ दिन तते ହେଲା ଟପର ହବୁ ମାନେ ହବୁ ଜବରଦସ୍ତି ହବୁ ହେଲା ସଇଲା ତାପରେ ଲେଖ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ ଦିଅ ଫୁଲ ଲେଖ this charged body ଲେଖ this charged body has the capacity to do work this charged body has the capacity to do work by moving other charges either by attraction देखो either by attraction or repulsion either by attraction or repulsion लिख लो ना नहीं ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ओके तापर लिखो बुलेट पॉइंट देखि लिखो हला बुलेट पॉइंट गोटे बुलेट पॉइंट देखि लिखो हला द एबिलिटी और कैपेसिटी लिखो द एबिलिटी और कैपेसिटी जिमिति बुलेट पॉइंट लिखुछो घर भीतर कोठरी भीतर हला सेमिति लिखिबो द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द चार्ज्ड टिके रहलो कौन लिखिलो पिले को
कौन लिखिल रे? The ability or capacity of the charged. Charged body, the ability or capacity of the charged body to do work, काम करिबा पाई, to do work is called electric potential, is called electric potential, is called electric potential. लिख लो, ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଗଲା। ओके, तापर लिखो, तापर मु लिखुछि, तापर लिखो कि कोन ना लिखिबो पिले कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल that is V, capital V is equal to कौन पिले ना work done divided by charge, work done divided by charge, that is work done which W divided by charge रो कौन पिले Q, yes or no? तो ये में कौन पाइबा देखो, पुणी कौन पाइबा, नोटबुक लिख एनबी देखिए, हाँ विशेष द्रष्टव्य लगो, ए बॉडी इज सेट टू बी, ए बॉडी देखो, ए बॉडी इज सेट टू हैव, is said to have an electric potential, an electric potential of 1 volt when 1 joule of work, 1 joule of work, 1 joule of work is done to give a charge of 1 coulomb, 1 coulomb, चार्ज रो यूनिट कौन कि पहले कूलम ना, तो से पे लिखा ला कूलम, 1 कूलम। आउ गोटे मेन पॉइंट लिखो इति कि द ग्रेटर, देखो द ग्रेटर the joules per coulomb, the greater the joules per coulomb on a charged body, on a charged body, the greater is its electric potential, ओके लिख लो, रेडी, अरे भाई ଆଜ୍ଞା रेडी है ना नहीं कौन, ओके आउ गोटे लिखिबो ई पॉइंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लो, आउ गोटे और लिखिबो कि यदि इच्छा लिखो, इच्छा नहीं लिखिबो मना कर दो, डाकिबी नहीं कहबो, डाकिबो न नहीं ଡାକନ୍ତୁ डाकिबा, हां लिखो और देखि लिखो, और लिखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, the electric potential at a point in an electric field, the field ভিতরে, in an electric field is the ratio of work done in in, okay, work done in bringing bringing, okay, bringing a test charge
a test charge from infinity to that point, from infinity to that point, look, from infinity to that point to the magnitude of the test charge. So, now the electric potential at a point in an electric field is the ratio of the work done in bringing a test charge from infinity to that point to the magnitude of the test charge. Ready? ଆଜ୍ଞା sir। Okay. तापर गोटे पॉइंट देखि लेख, if the work done, if the work done, if the work done in moving a test charge, if the work done, if the work done in moving a test charge q subscript 0, q एमती लिखियो पिले, एमती देखो लिखि दउची q subscript 0, q तळे 0 दबो हैला, small q तळे 0, from infinity to that point, infinity to that point, infinity to that point, infinity to that point, against the field is w, the field is w, the field is w, look, the field is w, then electric potential v is equal to, like the limit q subscript 0 to 0 w by q naught, एटा q naught को आजे हैला, लिखिलो ओवर आगु जिबा पे सइला ना नहीं ଆଜ୍ଞା sir। हम yes sir। हम आगु दिन लिखिबा। ओके, एबे दियो सल्ला, एबे आउथरे हेडिंग दियो, कोन दबा ना लिखिबा पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो पाठ आइला पाठ गोटे 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 आसिलानी आसिलानी जिबा भितरु पसिना ते पसिबा कोन अछि आस्ते आस्ते पसिबा असुविधा कोन अछि लो पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग दे रे पिले पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट रे लिखो वोल्टेज ब्रैकेट रे पिले लिखो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज देखो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज हैला देखो फर्स्ट डेफिनेशन रखुची तापर आउट डेफिनेशन रखबी चारटा डेफिनेशन रखबी तमर जोटा इच्छा तुम सेटा लिखो बुझी परलो माने कोन परीक्षा कि जोठू हैला बुझी परलो देखो फर्स्ट डाक दोची लिख दियो देखो टू मूव द इलेक्ट्रॉन देखो टू मूव द इलेक्ट्रॉन to move the electron to move the electron to move the electron through a conductor through a conductor through a conductor in a particular direction in a particular direction in a particular direction comma it requires some work or energy it requires some work or energy it requires some work or energy transfer
it requires some work or energy transfer which is done by an external, which is, which is done by an external electromotive force, external electromotive force, external electromotive force, ब्रैकेट भीतर लिख EMF, ब्रैकेट भीतर लिख पिले EMF, तापर लिख this electromotive force, लिख this electromotive force, this electromotive force, कौन लिख लो पिले, this electromotive force this electromotive force is also known as voltage or potential difference. This electromotive force is known as voltage or potential difference. लिख लो ओवर, अरे भाई लिख लो ना, नहीं को आगे हौ आउ थरे पढ़ो कौन लिखिलो, पढ़ो आगे आगे पढ़ो, अनुमति पढ़ो कौन लिखिलो, पढ़ो रे कौन लिखिलो. sir, to move the electron through a conductor in a potential in a particular direction is required some work or energy transfer which is done by an external electromotive force, EMF. This electromotive force is also known as voltage or potential difference. बास ता माने तुम कौन जान लो ना, ईएमएफ जहा पोटेंशियल डिफरेंस ताहा, वोल्टेज भी ताहा, होना नहीं रे पिले, अरे पिले होना नहीं हो तो ओके. जदि तीनटा समान जे किंतु तीनटा भीतर किसी वो डिफरेंस अच्छी, तो डिफरेंस टा मुझे कहबिनी, तुम कहबी आगु कहबी, तुम आगे जाओ टे खानतलास करो चारिआडे, खानतलास करी मते बुझी के कहबो हैला, तापर मु कहबी हैला. हो देखो पिले, धर को मानि नियो फॉर एन एग्जांपल, मोर एठी गोटे समथिंग गोटे अच्छी किछि भी, एटा मु कनेक्ट करछि एमती, धर को एटा मोर ए पॉइंट, धर को एटा मोर बी पॉइंट हैला, तो एटा धर को पॉजिटिव, एटा धर को नेगेटिव, तो एटी मु लिखि परिबी VAB, एटी ड्रॉप हेउची मोर, अरे भाई ए पॉइंट टू बी पॉइंट भीतर जति वोल्टेज होउची सेटा मु लिखि परिबिनी. धर मानियो कि दिस इज ए बैटरी, धर को मानिनियो कि एटा गोटे बैटरी, मानिनियो कि एटा गोटे बैटरी हैला, से बैटरी रु एई पटे जति कि आसिला ए पॉइंट को एई पट तापर एमती सर्कुलेट हबो ना, तो बैटरी माइनस प्लस अछि न नाही, जदी मु कहबी एटा प्लस एटा माइनस, तो प्लस रु गोटे वायर गेंजी देली, माइनस रु गोटे जो वायर गेंजी देली, एटी मु जतले मेजर करबी तो एटी मते से बैटरी रो वोल्टेज टा देखिबो ना नहीं, VAB वोल्ट माने ए बी भीतर वोल्टेज टा केते, ए आ बी पॉइंट भीतर वोल्टेज टा केते देखिबो ना नहीं, पॉइंट देखिबो. तो एटा में लिखि परिबा कोन, देखो कोन लिखि परिबा, लिखि हबो भी, कोन लिखि हबो ना, लिखो 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 लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference, the potential difference between 2 points A and B in an electric circuit, in an electric circuit is the energy or work needed
to move a unity charge from position A to B. From position पिले कौन ना A to B. Okay. तामने mathematically we can write down. लिखि परिवा mathematically we can write down that VAB is equal to WDW divided by DQ. अरे भाई हेलानी कि हबटी बस एतिकी लिखि परिवा. ओके. otherwise or ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା. କଣ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଆଉ କଣ ବି ଲେଖିପାରିବା. ଅଛି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ. ଦେଖ 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 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ ପିଲେ ଲେଖିପାରିବା ଭୋଲ୍ଟେଜ. ଲେଖ ଭୋଲ୍ଟେଜ is the energy required to move a unity charge through an electric field through an electric field measured in volt. measured in volt, that is bracket volts, that is V. तो V is equal to dW divided by dQ. एटा भी लिख परिया किछि बड़ कथा न लिखि हबो. otherwise simple definition आउरी भी simple definition आठू भी simple definition अछि. तुम मन रखिया पे सुविधा हो सेत पे हम कहू छला जोटा मन रखिया सुविधा हबो ना सब को मन रखिया पे सुविधा हो गिरे बिते जोटा हबो ना आठू simple होउची पिले. जदि हमें कहिबा हमें एमती भी कहि परिया पिले कोन voltage is nothing but देखो or voltage is nothing but simple main definition difference of charges between 2 points. simple sentence किछि नहीं. 2 points खेल खत्म एते नहीं एते गप्पा गप्पी नहीं डायरेक्ट बुझी पाइलो रेडी दिबा आगु. ओके. तापर जदि पूर्ण लिखिबा आउरी देखो आउरी अछि देखो तापर लेखो इन द एबव फिगर जो एबव फिगर ता में करि चंदी जोटारे ए बी लिखि चंदी VAB हैला सेड लेखो इन द एबव फिगर voltage across an element सेटा गोटे एलिमेंट भी धरो किछ असुविधा है. एलिमेंट between 2 points A and B is measured with A रे कौन थिला पिले प्लस थिला ना माइनस थिला. ए रे कौन थिला रे प्लस ना माइनस प्लस. बी रे कौन थिला ना माइनस रेस्पेक्टिवली माइनस साइन which defines लिखियो पड़ियो पिले which defines reference direction or polarity. पोलारिटी मध्य कुआ जाए पोलारिटी ऑफ वोल्टेज.
ओके सो मु लिखि परिबी आ गोटे सेंटेंस द voltage across two terminal or terminal in an element VAB can be defined in two ways दुईटा माध्यम रे आमे कहि परिबा केमति कहि परिबा पिले दुईटा माध्यम रे केमति कहि परिबा पिले ना वन पॉइंट इज प्लीज राइट डाउन ऑल ऑफ यू important point one point is point A is at the potential of is at a potential of VAB volts that is higher than lekho higher than point B or 2 point lekho puni the potential at point A with respect to point B is VAB. That means in general case हमें कही परिबा पिले ना in generally हमें कही परिबा VAB is equal to minus BA. अरे पिले कही परिबा ना नहीं तर मु सिंपल गोटे एग्जांपल दोची एठी गोटे एग्जांपल दे दोची बेटर मजा तुमको मिलिबो तुम जानि परिबो पिले एटा एक्चुअली मु दिनसरा कोन कहिबो चाहूची तुम बुझी पाउनो मु जानि तुम टिके बावळा होतो मु जानि टिके बावळा होतो कहि दोची रो देखो पिले मु तुमको कहूची देखो टिके तो बावळा हबो मु कोन कहि परिबो टिके बावळा हबो इखना मु जानि तुम देखो धर मान्य कि एटा गोटे एलिमेंट हैला मान्य कि दिस इज ए एलिमेंट ओके एटा बडो बेरा मो की वाला विषय मान्य कि एटा गोटे एलिमेंट हमें ताको गोटे कनेक्शन दोउचे हैला एटा होची दिस इज ए एलिमेंट हां दिस इज ए एलिमेंट्स एनी एलिमेंट्स मु जान नै कोन से हैला धर मान्य कि एटा तमरो ए टर्मिनल एटा तमरो पिले बी टर्मिनल हैला एटा प्लस एटा माइनस एटा धरको 3 वोल्ट दोउची पिले मते कहलो करंटटा को पटु जीवो पिले प्लस उर जीवन नै रे पिले एम्ति जीवन नै करंटटा अरे एम्ति जीवन नै यस और नो तो एठी मु लिखि पारिबी ए एलिमेंट रे केते वोल्टेज पिले ड्रॉप होतबो +3 वोल्ट होतबो तो ड्रॉप +3 वोल्ट तो ओके जदि मु सेही सेम जिंसटा को आउ गोटे कैटेगरी रे करबा को चाहूची देखो पिले आउ गोटे कैटेगरी मीन्स कोन एमती करबा को चाहूची सपोज फॉर एन एग्जांपल सेम एलिमेंट मु खाली कोन करी देखो सेम एलिमेंट मु कोन कली ना एटा को ए पॉइंट नेथली एटा बी पॉइंट नेथली ठीक अछि किंतु मु बी पॉइंट प्लस कर देली माइनस कर देली ए पॉइंट ताले पिले एटा पिले -3 वोल्ट होबना नै उल्टी जीवना नै मते को पिले उल्टी जीवन नहीं करंट ताले कुकुटा पिले फ्लो हो एमितिया फ्लो हो ना हो ना नहीं को यस और नो Yes. हबो तो हां तो मुई क्या लिखि परिबी लेखो ए लिखि दियो फिगर नंबर 2 हैला एटा लिखि दियो फिगर नंबर 2a हैला एटा लिखि दियो फिगर नंबर 2b हैला एटा बुझी बिना कि तुम लिखि भी तो जिनसटा सेट पे मु लिखि लेखो इन द एबव फिगर ना लिखिबेनी कहू कोन कोन तुम जा कहबो लिखिबेनी कि लिखे इन द एबव फिगर नंबर 2a फिगर नंबर 2a देखो पॉइंट A
point A is 3 volt higher than B, and in the figure B, point B is minus 3 volt higher than A point. Clear? So it is concluded that in figure A there is 3 volt drop from point A to B, and figure B it is equivalent figure B it is equivalent that there is a voltage drop from point B to A. बस ता माने पॉइंट B to A माने सेठी बुझिबो देखो फोन टिके तो कोन हला पिले मु एबे लिखि परिबी कि VAB is equal to 3 volt तापर लिखि पारि पिले VAB is equal to minus 3 volt otherwise ए माइनस टाउ जदी मु प्लस करियो चाहिबी ताले पिले मु कोन लिखि परिबी मु एटा एमिति लिखि परिबी VBA is equal to 3 volt एटा जहा पिले एटा ताहा ना नहीं मते को अरे पिले समान हबो ना नहीं मते को एई दिटा समान हबो ना नहीं मते को अरे भाई एई दिटा समान हबो ना नहीं को अरे भाई VA देखो भाई मु तुमको सेतेले भी कहितली एटा A पॉइंट एटा B पॉइंट तमे A रु B की जेते जाउ तो तमरो +3 वोल्ट हला जेते B रु A को आसीबो सेटा -3 वोल्ट हबो ना तो हेलानी कि पिले VAB -3 वोल्ट हला तले VB एटा +3 वोल्ट हबो ना नहीं अरे पिले हबो ना नहीं मते को हाँ सर समान तो बास सेई दिन सटा होची कथा आउ कोन एका कथा अरे भाई जदि जानी पाउनो देखो पिले जदि जानी पाउनो आउ गोटे एग्जांपल दे दूचे ताकि तुम बुझी पारिबो सेटा फिजिकल गोटे दे दो एग्जांपल देखो एटा तम घर हैला तमे मानि नियो एटा तम घर पिले एटा तम घर हैला एठी तमरो तोरक बाजार अछि बाजार ओके बाजार तमे तम घरु बाहरलो बाजार को बाहरलो हैला घरु बाहरलो बाजार को बाहरलो चल गलो तोरक 1.6 किलोमीटर गलो हैला बाजार को पुणी तुम घर जिते बड़े तुम गल भाई माडी गलो माने कौन पॉजिटिव रे गलो भाई पॉजिटिव रे गलो तुम पुणी बाजार तुम घर को रिटर्न करिवो सेही 1.6 किलोमीटर रिटर्न करिवो ना सेटा कोन बॉडी की 2.6 किलोमीटर हे जिवो कि पिले हबोनी ना तो जेति की जाइतलो सेति की आसिल तो 1.6 माइनस 1.6 जेति जीरो ना नहीं कथाटा मोर सेया तो भाई सेटा माइनस हबो ना नहीं मते को ना एटा प्लस हे की जीवो रे ऐड हबो की अरे भाई मोर कहवा कथा धर को मानि नियो एडो तुम माडुआ उडा ना टी देखिदवा तमे एटू घरु बाहरलो हला घर को बाजार को गलो एटी देखितिलो एट धर मझिरे गोटे सुंदरी झियोटे छिड़ा आइछि बुझाओ ना तुम सेमते बुझिले तुम भल लागियो टी छिड़ा आइछि तार एमती झाग माने कोन बासुली को भलिया चुटी अछि हला ताऊ देखिदलो तुम डर लागिला तापरे किंतु सुंदर टिकिन तार कोन बासुली भलिया चुटी उडा आइछि हला तुम डर लागला पुणी तुम जे बाजार फेरुच पुणी से बासुली टे देखिबो ना नहीं मते को ना देखिबो नि रे देखिबो देखि कि जीवो ना तो सेटा कोन हला तमे एउठी कोन कलो तमे डर डरी जाइतलो पुणी एउठी तिक आसला बळे से डरटा तुम छाडला परे तुम घर को आसी पहुंचीले तुम डर खत्म सेटा होची कथा तो एपटू गलो प्लस रे गलो सेपटू गइले तो माइनस रे आसीबो ना नहीं भाई सेटा होची कथा
କ୍ଲିୟର? ଯିବା ଆଗକୁ ନା ବସିବା କିରେ କୁହ? ଆଗକୁ ଯିବା। ସଇଲା? ଆରେ ଭାଇ ସଇଲା ନା ନାଇଁ କୁହ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା ତ? ଓମ୍ସ ଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଓମ୍ସ ଲ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଦେଖ ପିଲେ, ଓମ୍ସ ଲ ପଢିଲା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କି ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ ଜାଣିଗଲ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ତମର ରହିଗଲା ବାକି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ? ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିଁ ଆସିବ ଓମ୍ସ ଲ ଜିନିଷଟା, ହେଲା? ତ ପ୍ଲିଜ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ और रेजिस्टर। रेजिस्टर एक्चुअली रेजिस्टर कौन पिले? रेजिस्टर होची पिले कौन ना, जीए होची करंट रो फ्लो को जी अपोज करे, सी होची रेजिस्टेंस, आउ किछि नै। कोन ना, जीए करंट रो फ्लो को कोन करे पिले? कोन करे? अपोज करे। देखिबा पांचटा छटा खंड डेफिनेशन दे देबा, कोन असुविधा अछि? असुविधा नै, हम पिला तो डेफिनेशन पे के प्रयोज्य लेखो जाऊ टाइम, किंतु भलो कि लेखो। लेखो रेजिस्टेंस होची गोटे मटेरियल, आउ किछि नै, हला? गोटे कंपोनेंट। देखो रेजिस्टेंस इज ए मटेरियल। देखो ए मटेरियल टेंडेंसी 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 टू रेजिस्ट। रेजिस्ट माने कौन कहलो? बाधा दबा बा रोकीबा। रेजिस्ट मतलब होची बाधा दबा बा रोकीबा, हला? टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ the flow of charge or current. Charge is also called current ना, सेटा लिखो, also called as current okay? So otherwise or else ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା କଣ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ବି ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା रेजिस्टेंस रो। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ କି सेटा तो गोटे गला, गोटे लिखिदेल किसी असुविधा नहीं। आउ गोटे लेख, आउ गोटे लेख पिले, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी। रेजिस्टर रु आइला रेजिस्टेंस, मन रख है ना, रेजिस्टर रु आसला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होची प्रॉपर्टी, हैला? मन रख पिले, रेजिस्टेंस होची पिले प्रॉपर्टी, हैला? रेजिस्टेंस इज ए property of conductor by which it opposes the flow of current that is पुन लिखिए पड़ो ना, that is resistance of the conductor is defined as the ratio of potential difference PD, okay, applied to the current through the conductor, or through the conductor. रेडी तो कुओ तापर जी आगु पुणी कोरी हेलान नहीं। ओके रेडी, ओके रेजिस्टर सरला ताले आउ गोटे लिखि दबा कि रेजिस्टर डिपेंडेंस कोन तुम जेते कहू हाँ लिखि सर। पाई, तुम जेते कहू मु सेते लिखि जंजो ना हेला। तुम जानि न मते भाई, तुम जेते कहबो मु सेते लिखि देबी। रुओ आउट लिख दो, आउट लिख दो कौन ये गोटे बड़ कथा। देखो
और लिखो रेजिस्टर हला रेजिस्टर रो आउट लिखो और लिखो इट इज द प्रॉपर्टी it is the property it is the property of a substance due to which it opposes the flow of current through it ଆଉ रेजिस्टेंस रो सिंबल कोन तार ये कोन ना तार सिंबल होची पिले एमतिया एटा होची रेजिस्टेंस हला तो एथिरे करंट किंति फ्लो हुए ना एटा रेजिस्टेंस एमती करंट फ्लो हुए देखो पिले एठी आई हला आ वोल्टेज अक्रॉस रे देखाए VT हला और V वोल्टेज हला ता माने रेजिस्टेंस रो फार्मूला पिले कोन ना रेजिस्टेंस रो फार्मूला होची आ ताको R बोली डिनोटेट करा जाय सेटा तो समस्त जानिचो आ तार यूनिट पिले कोन ना तार यूनिटी होची ओम आ तार सिंबल टा होची साइन टा एमटी हला आउ डिनोटेड बाय कैपिटल R ओके सो आउट दिन सो लिखि दियो कि 1 ओम होची 1 ओम एमति लिख परिबा हला 1 किलो ओम 1 किलो ओम मतलब पिले कोन ना 1000 ओम मने रखो 1000 ओम मतलब 10 to the power 3 ओम आउट लिखो 1 मेगा ओम 1 मेगा मतलब कोन ना एक रे केटा सुनो 6टा 10 to the power 6 ओम 1 माइक्रो ओम मतलब केते जानजो माइक्रो नानो बहुत अच्छी माइक्रो 1 बाई एक रे 6टा सुनो और 10 to the power -6 ओम 10 to the power -6 10 to the power -6 ओम 10 to the power -6 ओम ओके ओके रेडी सरला पिले लिखिलो अरे पिले लिखिलो ना नहीं मते को लिखिलो तो ओके 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 ताले एबे ओम्स लॉ में पढ़ी परिबा तो ओम्स लॉ पिले कोन देखो बुझिबा को चेष्टा करिवो ओम्स लॉ टा कोन बुझिचो ऑलरेडी आगुरु हैला देखो ओम्स लॉ सॉरी ओम्स लॉ पिले कोन ना ओम्स लॉ कोन कहूची ओम्स लॉ खाली कहूची कि एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर हैला एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आउ किछि नै एति कहूची कोन ना ओम्स लॉ किंतु आमे ताको बढ़े चुनै की गुडाई लिखंती सेहि पे आमे कंफ्यूजन ने पढ़ंती तो देखो आमे लिखिबा आगे देखो आगे देखो तांकर टिके तांको विषय टिके लिख दो आगे टे तांको विषय लिख दो तापर जीवा भितर ना को कहू कि रे होना नहीं देखो देखो जर्मन फिजिसिस्ट देखो जर्मन फिजिसिस्ट जियोग्रेक सीमन्स ओम है सीमन ओम से कौन करथिले ना हु पब्लिश्ड देखो
published, who published a pamphlet, देखो, who published a pamphlet, बापा, a pamphlet, PAMPHLET, okay, pamphlet in केतेरे 1827, okay, that कौन हला describe, से कौन describe करते describe the results of one of the first effort, results of one of the first effort to measure current and voltage, voltage and and mathematical relation with them, mathematical relation with them, okay. So देखो, once result one result was a statement, ठीक है ना, one result was statement of the fundamental relationship which is called as Ohm's law, okay. So it relates, देखो, it relates current and voltage for a resistor, कौन दे पिले रेजिस्टर, ओके ओके, लिखी लो एतिकी, अरे लिखी लो ना, नहीं लिखी दो तो, ओके। अरे लिप्सा, तो मोबाइल अगर के जण बइछ, के जण बइछ रे, क अनुमुटी के जण बइछ, क कहूनु, के जण बइछ गोटे मोबाइल अगर, लिप्सा तो पचारुछि बा, अरे तो कौन पचारुछि बा, ना रिमूव करिवि क्लास रु, करूछि, हां जा सोई पड़, तो अनमुट हबुनु, तमान तू एठी नाउ, तो तू एठी काई रहिबु, एठी बेकार रिमूव, सिंपली रिमूव करो। क्लास भीतर गोटे मोबाइल अगर 15 जन बसियो नहीं, चुतिया बनौछ हमको, नहीं कि हो देखो ओम्स लॉ, तापर लॉ टा लेखो, हम तीन प्रकार लॉ लिखिबा, मना नहीं, सब लॉ को मिसई लिखिबा, असुविधा कोन अछि, हला लेखो ओम्स लॉ, states that the voltage V across conducting materials is directly
is directly proportional to the current I, small I, okay, current I flowing through the material, flowing through the material, through the material. Okay, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ଅଛି ସେଇ ସମାନ ସମାନ ଜିନିଷ ଭାଇ। ହଁ କଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ପିଲେ, ଅର ଲେଖ, ଅର ଦେଇକି ଲେଖ। This law it states that the voltage across a resistor, the voltage across a resistor is directly proportional to the current flowing through the resistor. The current flowing through the resistor. The resistor, provided the temperature remains constant. Provided the temperature remains constant. Remains constant. Or ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବେ, କାହିଁ ନ ଲେଖିପାରିବେ, ହବ ଲେଖ ଲେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ନା ନାଇଁ, ନା ଲେଖିବନି ରେ ପିଲେ, ଲେଖିବଟି? ଲେଖିବା ସାର୍। ଲେଖିବା ସାର୍। ଆଉ ଏଥର ଆଉ ଛଡା ଛଡି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଛାଡିବନି ବି ତମେ ମତେ ଲାଗିଲାନି। ଲେଖ, according to this law, if there is no change in the physical state of a conductor such as temperature, okay, মানে temperature change নহলে, then the ratio of the potential difference applied at its ends and the current flowing through it is constant. Thus ମାନେଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଦେଖ, thus if the potential difference PD, the potential difference at the ends of the conductor BV and current flowing and the current flowing
to it be small I, then according to the Ohm's law, we have V by I is equal to R. That is a constant. That is a constant. or ଆମେ लिखि परिबा मेन डेफिनेशन जोटा हमरो कि हमरो the voltage across a resistor is directly proportional to the current flowing through the resistor at temperature constant remains constant. That means ता माने पिले कोन ना our V is directly proportional to I और ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटेबा को हेले हमकु एठी गोटे R गुणिबा को पड़िबो R into I. तो ई R होउची पिले गोटे कांस्टेंट हला हमें प्रोपोर्शनल को उठेइले. ओके सो हमें लिखि परिबा को लिखि परिबा पिले ना लिखि परिबा the proportionality constant R is resistance in ohms. Okay, so again rewriting this equation, so this will be R is equal to कौन है जो पिले V by I जीवन ना नहीं तो V by I जो दी गला तो हम कोई पर भी implies that 1 volt per ampere किछ असुविधा अछि करे पिले अरे करंट रोचे एम्पियर ता यूनिट जानी लिखि परिबी ना नहीं मते को लिखि परिबी ना नहीं लिखि परिबी. ओके ता माने कोन सेटा लिखियो पड़ियो पिले ता माने ता लिखियो पड़ियो न लिखले हबो नहीं कोन लिखियो पड़ियो ता 10 the resistance is equal to the लिखियो पड़ियो 10 the resistance is equal to the ratio of voltage and current तब लिखो the relationship or the relation between voltage and current of a resistor is shown in figure below आमे देखैबा सेटा केमिति ना तमे जानलो V is directly proportional to पिले आमे कोन जानले V is directly proportional to I. that means मते को वोल्टेज बढ़िले करंट बढ़िबो ना नै रे पिले निहाती बढ़िबो जदि वोल्टेज कमिबो ताले करंट कमिबो ना नै रे पिले को मते अरे होना नै अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताले आमे फार्मूला को पाइले ना V is equal to I into R तो मते कहि परिबी R is equal to V upon R ना सॉरी I is equal to V upon R ताले एठी आमे एतिकी फार्मूला पाई गले हैला तो मते एठी गोटे ग्राफिकल मेथड तुम मानकु देखै दउची हैला ताकि तुम सारा जानी परिबो तरक मु x एक्सिस रे पिले नै गली करंट को हैला x एक्सिस रे पिले मु करंट को नै गली हैला एटा को मु करंट नै जाउची y एक्सिस टा को वोल्टेज नै गली तो आमे जानि चंदी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हैला तले वोल्टेज जत्ते बढ़िबो करंट सेत्ते बढ़ी जीवो किंतु रेजिस्टेंस कोन गोटे कांस्टेंट सो दैट एटा होची ओरिजिन पॉइंट तो तुम रेजिस्टेंस एक्सिस टा पूरा कांस्टेंट हेगी जीवो किमि जीवो पिले ना पूरा एमती कांस्टेंट हेगी जीवो कांस्टेंट हेगी काहे की गला पिले
कन्स्टांट ହେଇକି ଗଲା ସାର୍ କାହିଁକି ନା ତମର ଯଦି ମୁଁ ଧର କହିବି ଏଇଟା ହଉଛି କରେଣ୍ଟ ଧର 1 ଆମ୍ପିୟର ଏଠି ଅଛି ଏଠି ଧର 2 ଆମ୍ପିୟର ଅଛି 3 ଆମ୍ପିୟର ଅଛି ଏଠି 4 ଆମ୍ପିୟର ଅଛି ଏଠି 5 ଆମ୍ପିୟର ଅଛି ଏଠି 6 ଆମ୍ପିୟର ଅଛି ଏଠି ସେମିତି ଏଠି ଧର 1 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି ଏଠି 2 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି ଏଠି 3 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି ଏଠି 4 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି ଏଠି 5 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି ଏଠି 6 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ସମାନ ସମାନ ଦେଖ ପୁରା ଦେଖ ସମାନ ସମାନ ଦେଖ ଆସିବ 1 ଆମ୍ପିୟର ଦେଖିଲ 1 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ 1 ଆମ୍ପିୟର 1 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି 2 ଆମ୍ପିୟର 2 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଅଛି ସେମିତି 3 ରେ ପିଲେ ଦେଖ 3 ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି 4 ରେ ଦେଖ ପିଲେ 4 ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି 5 ରେ ପିଲେ ଦେଖ 5 ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖ କରେଣ୍ଟ ଯେତେ ବଢୁଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସେତେ ବଢୁଛି ଆରେ ଭାଇ ବଢୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖୁନ ଆରେ ପିଲେ ବଢୁଛି ନା ନାହିଁ କହୁନ ମତେ ନାଇଁ ସାର୍ ବଢୁ ନାହିଁ ବଢୁଛି ତ ଆଟେ ଗୋଟେ ସମାନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ବଢୁଛି ତ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଉପନୀତ ପାଇଲି ନା ମୁଁ ପାଇଲି କି ମୋର ନା କଣ ପାଇଲି ନା v is directly proportional to I ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି କହି ଦଉଛି ପିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଇଲେ କି I is equal to v upon r ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ତମକୁ କହି ଦଉଛି ସେଟା ଏଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ମୁଁ ପଢେଇବି ଆଗକୁ ହେଲା g means ହଉଛି conductance ହଉଛି the reciprocal of resistance ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଖିନା ଏଇ ଇକ୍वेସନ ରେ ମୁଁ r ଜାଗାରେ କଣ ପକେଇ ପାରିବି ମତେ କୁହ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ପାରିବି ପିଲେ सिंपली लिखिपारि implies that r is equal to 1 by g किछ असुविधा अछि पिले अरे पिले लिखिपारि ना नै मते को तो लिखिपारि अगेन सेही सेम थिंग टाको I is equal to v by r जगह रे मु 1 by g जदी पकेइबी ताले मोर एटा I is equal to केते हिजो रे पिले implies that I is equal to v into g होबो ना नै वोल्टेज इनटू कंडक्टेंस हबो ओके सो एतिकी तमर थिला ओम्स लॉ मु एते आजि ओम्स लॉ भी पढीनी हैला मु तुमको एई ओम्स लॉ टा मु खाली एति तुम बुझेई देली हैला नेक्स्ट क्लास आमे ओम्स लॉ टा फिजिकल एग्जांपल देकी बुझीबा आ ओम्स लॉ टा पूरा प्रूव करिबा फिजिकल एग्जांपल देकी बुझी के तो प्रूव करिबा प्रूव कर सरला परे जाय के हमर ओम्स लॉ सरीबो तापर आमे सीरीज पैरेलल एगुडा हेता जसा ताकू आगु को ओके जीबा सो ओके तो पिले ओके आ, तो पिला माने आज एतिकी थिबो ହେଲା ରହିला काली आमे ठीक से ओम्स लॉ टा वेरिफिकेशन करिबा तापरे आमे आगु को जीवा ओके सो आई होप कि समस्ते ठीक से बुझी पारथिबो किछ असुविधा नथिबो सो थैंक यू ऑल गुड नाइट गॉड ब्लेस जय महाकाल जय श्री राम जय महाकाल जय श्री राम राधे राधे लव यू ऑल समस्त भल थाओ सुस्थ थाओ आराम से पाठ पढ़ जदि किसी डाउट होची मते पचार जदि आम ग्रुप रे जॉइन करन ताले तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया से सर्वे फॉर्म को फिलअप कर देन आफ्टर आमर व्हाट्सएप रे जॉइन हो पारिबो किछि असुविधा नहीं नो डाउट 24/7 में पचारि पारिबो मते डाउट किछि असुविधा नहीं तो थैंक यू ऑल गुड नाइट गॉड ब्लेस जय जगन्नाथ जय श्री राम जय महाकाल थैंक यू को माने सब लास्ट को थिले तांको ना टिके पढ़ी दबा इंजीनियरिंग टाइम्स अजय केतन पटेल से तो मोर जने भाई एंड हॉस्टल गेमर्स राइडर्स सौम्यरंजन कर नमस्कार एंड सुधांशु शेखर मल्ली सॉरी मुदली ओके ओके थैंक यू ऑल गॉड ब्लेस गुड नाइट थैंक यू ऑल